Thank you for the introduction, Farhad, even though I didn't need it. Yes, so usme we'll touch upon certain things. You guys will have to excuse me for 5-10 minutes. अगर बच्चे की आवाज़ें पीछे से आएं, so my son has joined me as well. He'll be leaving in a while when my wife comes and takes him. So again, जिस तरह फरहाद ने कहा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि मार्केट रिसर्च आपकी कितनी है. हमारे पास स्टार्टअप्स, सो मी एंड फरहाद वी बीन डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years. 5 कोड हम लोग ने सेलेक्ट कर लिए हैं. हर कोड में अराउंड 400-450 पीपल अप्लाई. एंड मजे की बात यह है कि उसमें से वी स्ट्रगल टू पिक 10-20 स्टार्टअप्स. उसके की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि when startups come and they apply to NIC, they pitch their ideas, किसी ने रिसर्च नहीं की होती. नो वन हैज एनी क्लू व्हाट दे वांट टू डू. दे ओनली हैव एन आइडिया, और उसमें दे डोंट हैव एनी मार्केट रिसर्च व्हाटसोएवर, स्पेशली कस्टमर्स के हवाले से. So today the discussion is going to be very customer centric, क्योंकि at the end of the day जब कस्टमर नहीं होंगे, so why are you even making a product or giving a service, right? So again, we'll talk about how to be customer centric, customer profiles वगैरह जो है उस पे हम बात करेंगे, different type की चीजें होंगी. So I'll share my screen and we'll begin. अच्छा जी. So again, NIC के startups तो जानते हैं मुझे. दुर्शल के startups, those of you who don't know, my name is Bilal Farooq Khan. नीचे मेरा personal email address mentioned है. Anyone who wants to reach out to me after the session, yeah, whenever you feel like there's something you want to ask me or you want to talk to me about, so you can note down my email address and we can correspond via email later on. So सबसे पहले we'll start with the lean startup methodology. Can we have like a show of hands? कितने लोगों को पता है कि what is the lean startup methodology? No show of hands. अच्छा. Someone writing on the screen? अच्छा. चले. I don't think anyone raised their hand. So the lean startup methodology is when you, Farhad, I think someone is writing on the screen. Howard, can you check? Yeah, so Bilal, can you do me a favor? आप ऊपर जैसा जाओ, देखो आपके टॉप पे उधर आपके पास आ रहा है व्यू ऑप्शंस का एक बटन. Sorry, कौन सा ऑप्शन का? व्यू ऑप्शंस या ऊपर टॉप पे देखो आपके पास एक बटन आ रहा होगा स्क्रीन के जहाँ पे शेयर के साथ एक बटन आ रहा होगा. टॉप पे देखो, टॉप राइट पे एक बटन है, उसमें देखो क्लिक करोगे ना व्यू ऑप्शंस, तो एनोटेट का ऑप्शन आ रहा होगा. Oh yeah, ठीक है. हाँ, तो उसमें कर दो एनोटेट, क्लोज कर दो, फिर नहीं लिख सकते. ओके. अच्छा, खबर इज द चैट क्लोज्ड के लोग जो है वो नहीं लिख सकते. नहीं बॉस, chat is open. People are commenting. है तो प्लीज वो आप वो कर दो, चैट के ऊपर बात कर लो. इसमें आप इस पे स्क्रीन पे मत लिखो. बिलाल, you can start now. ठीक है. So the lean startup methodology हमारे पास वो होता है कि जिसमें हम लोग पहले मार्केट टेस्टिंग करते हैं before we launch the product full fledged. तो we sort of create a minimum version जिसको हम MVP कहते हैं. So that's a minimum viable product. So we create the basic product and we use it to test the market, right? So जिस तरह के let's say prototype हो गया. I'll have him taken away. So जिस तरह आपका MVP हो गया, so you make a minimum viable product. Prototypes में आ जाते हैं, बाकी सारी चीजें आ जाती हैं. So इसका फायदा क्या होता है? Number one, एक तो ये होता है कि whenever you're creating a product or a service, so you need a lot of research and development. आपको काफी सारा, and when you do R&D, when you create the product, right? So again, एक उसमें जो cost involved होती है वो बहुत बड़ी होती है, right? Because if you want everything to be perfect when your product hits the market, right? और market उसको reject कर देती है, so all that money, all that effort goes down the drain. So उससे बेहतर ये है कि you launch a product, you launch your MVP, your minimum viable product, और उससे आप market testing करते हैं, and you take the feedback from the customers. You tell them कि भाई ये हमारा MVP है. You don't say that this is the finished product. You say this is our MVP. What changes would you like to have, right? इसमें क्या ऐसी चीजें हैं कि जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं. So you always start
with a few features. एक दो चीजें डाल दें. कल भी मेरी हमारे एक स्टार्टअप से डिस्कशन हो रही थी कि आई थिंक जाउल के साथ हो रही थी. मैंने टोल्ड हर के for a restaurant to start with a menu जिसमें 20 चीजें हों, it is going to be very difficult if it's their first time, right? So the waiters are confused, the chefs are confused, you don't know what ingredients to bring, क्या होगा क्या नहीं होगा. But on the other hand, if you start with 2 dishes and you keep on adding लोगों की recommendations के साथ साथ, so that's something जो कि organically with time that thing grows, right? So again, work smarter not harder. उसमें वही बात आ जाती है कि you have to narrow down, ठीक है, कि what are the things that your customer needs, and you put in those things in your MVP. Maybe you put in you put something in your MVP जो कि लोगों को नहीं चाहिए, right? So they will clearly tell you कि भाई ये feature नहीं चाहिए, तो उस feature पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, उस सर्विस पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, उसमें और पैसे जो है डालना. तो that's just going to be easier for you guys कि आप उसमें पे ज़्यादा टाइम और वो एनर्जी ना वेस्ट करना, राइट? सो अगेन इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर. सो सर्कलिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट के डेवलपमेंट एमवीपी, आपका जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है उस पे आप जो है वो करें, बैंक ऑन दैट, एंड उससे आप कस्टमर से जो फीडबैक है वो आप अपने एमवीपी पे उनसे लें. सो कमिंग टू सम success stories around the globe जिन्होंने how did they develop their MVP, right? So Facebook, probably all of you have watched the movie The Social Network, right? उससे आपको पता चला होगा. So how did Facebook start? Did Facebook create a website globally कि भाई सारे आ जाओ and start जो है अपना hanging out with your own friends, old friends online, your family members जो कि पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं, जहाँ भी हैं, right? So they didn't do that. Initially what they did कि Facebook was only restricted to the Harvard campus. It was supposed to be a website which connects students together, right? So all Facebook's MVP did was connect students together via their college and class, and let them post messages to their boards, right? So if you watch the movie, उसमें भी आपने देखा होगा, so they start with Harvard and then they start moving, क्योंकि Harvard is on the East Coast, they started moving towards the west. ऐसा करते 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 then they reached Stanford. And then it was a very big deal for them when they launched in Oxford, across the pond as they call it, right? So if you look at Facebook, one of the world's largest companies at this point in time, उससे उन लोगों ने, so Facebook, we have seen उन्होंने कितने versions change किए, right? So no one uses the Facebook wall anymore. I'm not even sure if the wall exists anymore or not, right? So पहले एक दूसरे के wall पे हम लोग post करते थे. There were so many other features that were useless. There were so many other features that were useful. अब Messenger को उन लोगों ने all together एक अलग communication का tool बना दिया, right? So the Messenger was very successful for them. उसमें उन लोगों ने video call, audio call, वो सारी चीजें उसके अंदर उन लोगों ने add की. So again, they started off very small. और उसको करते करते उन्होंने एक इतना बड़ा platform आज बना लिया, right? So again, Airbnb से भी I'm very sure सारे familiar होंगे. So Airbnb, again, very interestingly, इनका MVP ये था कि there was a conference going on in San Francisco. जो दोनों founders थे, वो जो है they lived in an apartment in San Francisco. So what they did कि उन्होंने just to test their MVP, इन्होंने they as I stated कि they just took a few pictures of their loft, और उन्होंने एक website है, आप लोगों कुछ लोग familiar होंगे, Craigslist. So Craigslist is sort of an old school kind of blog kind of website जिसपे लोग जो है classifieds post करते हैं, ads if they want something, नौकरियों से लेके A to Z सब कुछ Craigslist पे post किया जाता है. So they posted that on Craigslist. Facebook वगैरह उसको ऐसा था नहीं. तो जब इन लोगों ने post किया, so they got a lot of उसमें से interest मिला. People were willing to come and pay for a room in their apartment and attend the conference for a couple of days. So वहाँ से उनका idea जो है वो हुआ. So they sort of made it a habit of putting up their room for rent. खुद भी रहते थे, एक कमरा लोगों ने rent पे लगाया. वहाँ से लोगों ने testing की कि there actually is a need कि people want to stay. अब initially अगर भी देखा जाए तो who would want some sort of a stranger coming and living in their apartment, right? Similarly हमारी तरफ तो फिलहाल Airbnb कराची लाहौर साइड पे मे भी थोड़ा बहुत वो हो गया है, and people don't make people live with themselves. Maybe एक घर या अपार्टमेंट अलग से लिया होगा जहाँ पे हो. लेकिन even in the US, people weren't sure कि how is this going to happen कि you invite strangers to live in your house for a couple of days, और वो they pay you rent against that, right? So वहाँ से उनका idea जो है वो बढ़ता गया. अब यहाँ तक कि recently I was checking Airbnb.
excuse me. So उसमें भी तक यहाँ तक कि उन लोगों ने लोकल टूर जो है वो भी इनकॉर्पोरेट कर लिए. So they've realized that a lot of times the people using Airbnb are visiting some other country and they're there for mostly leisure, right? So उन्होंने what happened now कि उन लोगों ने leisure activities के अंदर include कर दिए. So you can also book an activity through Airbnb around the area you're staying, right? So from just a rental, short-term rental business, Airbnb is now entering, let's say, the tourism and the experience business as well, right? So, and they all started with that one ad on Craigslist about their apartment, right? अच्छा, similarly, फिर हम आते हैं Amazon पे. So Amazon, we all know Amazon started as the Amazon bookstore, right? So initially वो सिर्फ किताबें बेचते थे. So Jeff Bezos, now the richest man in the world, उस वक्त जो है we all know that he started out of his garage, उसने उसको convert किया, and he would sell books, ठीक है? So that those books were his MVP, ठीक है? उसने जो है स्टार्ट लिया बुक्स से, पे उसने और आइटम्स ऐड करने शुरू किए. अब मेरे ख्याल से दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको Amazon पे नहीं मिलती, राइट? सो अगेन start small and start adding things later on. Dropbox did this very intelligently, right? So what Dropbox did, they made an explainer video, right? So they thought कि एक हो सकता है फाइल शेयरिंग मैकेनिज्म. उस वक्त ये था कि ईमेल में इतनी स्पेस होती नहीं थी. So they wanted कि भाई there is a demand और लोग करना चाहते हैं, लेकिन how do we do it, right? अभी अगर वो डेवलपमेंट करते हैं, उस पर टाइम भी लगता है, उस पर कॉस्ट भी लगती है, and what if people didn't want it, right? So Dropbox did what usually a lot of startups do. आजकल आपकी जो जितनी क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स हैं उस पे आजकल यही जो है ट्रेंड चल रहा है कि they make explainer videos and then people जो है उनको वो क्राउड फंडिंग करते हैं, they make the product. So back in the day उस वक्त इन लोगों ने they were sort of the pioneers of this thing कि they made an explainer video. They didn't say कि this is a service जो कि अभी launch नहीं हुई, right? So they said this is a service you can use to send big files, you can use to store big files, ठीक है? और इसको जो है would you like to subscribe, right? और वो उन लोगों ने ईमेल के जरिए सर्कुलेट किया. The response they got was overwhelming. Their inbox crashed and all of those things, and उस समय को पता चला कि there is a very big demand for this thing and they instantly started working on it, right? और वहाँ से उन लोगों ने एक start लिया and they then rolled out their final product. Similarly, Foursquare जो है the MVP allowed you to check into different locations that would award you with different badges as part of their gamification process. So Foursquare अभी अगर किसी को याद हो used to be जो Facebook में check-ins वगैरह होते थे. So अब जो है they initially started off with check-ins. उसके बाद आप इसमें जो है जगह को रेट कर सकते थे, आप रेस्टोरेंट्स को रेट कर सकते थे, आप फूड को रेट कर सकते थे. So this is something that Facebook then picked from Foursquare और वो सारी चीज़ों लोगों ने incorporate की. So basically Facebook took the Foursquare's MVP और उन लोगों ने incorporate की उसको अपने वाले मॉडल में and then they went from there. अच्छा, फिर iPhone, when Apple released their first version of the iPhone, it was lacking many basic functionalities. For example, the most basic of things, copy paste, वो नहीं था iPhone में, the first model. And iPhone, जो Apple used to make computers, people were not very sure कि भाई हम लोग how is iPhone going to fare against the competition. उस वक्त Nokia was on top, बाकी सारे जो है Samsung भी even था, काफी सारे Sony Ericsson वगैरह वो सारे थे. So iPhone was totally new to the game. लेकिन उन्होंने they made that basic model, ठीक है, and they just wanted to test the market. If the market is big enough for their products, and उसमें even though चीजें lack कर रही थी iPhone में as compared to other people, कैमरा इतना अच्छा नहीं था, बाकी basic functions और कुछ नहीं थे. लेकिन again the market response was very good, so they went ahead with it, and we all see where iPhone is today. So again, the basic idea being is that fill the communication gap, right? So make bridges, not paper planes. मकसद ये है कि talk to your customers. ठीक है, there always is a communication gap. आप जाके customer से वो communication gap fill करें. वो कैसे fill करेंगे? So we'll talk about. So does your product or service have value? हम जब उसकी बात करते हैं value addition की जब बात करते हैं, right? So for example, एक बंदा है वो माउस बना रहा है, दूसरा बंदा है वो भी माउस बना रहा है. So जो दूसरा बंदे ने मार्केट में एंट्री मारी है, what extra value does he offer to the customers, right? So that is what you guys have to think कि आपने अपने competitors के साथ अपने आप को compare करके देखना है कि क्या value है that your product or service holds over your competitors, right? So again, talking about value. So the business environment
the customer preferences, social trends, environmental issues, economic factors. All of these things are in perpetual flux. ठीक है, they're constantly changing people's concept of value. ठीक है, आज शायद एक चीज की value हो, कल शायद उस चीज की value ना हो, right? For example, alarm clocks. ठीक है, for example, और इतनी ज्यादा चीजें कि which were very flashlights. ठीक है, इतनी ज्यादा चीजें जो कि एक फोन की वजह से, एक स्मार्टफोन की वजह से उन लोगों के बिजनेस खत्म होंगे, राइट? सो कस्टमर वो सारी वैल्यू की प्रोपोजिशन चेंज होती रहती है ओवर टाइम, सो यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ, योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, राइट? अच्छा, सो वैल्यू एडिशन किस तरह करते हैं हम लोग, राइट? सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ गूगल मैप्स. द प्रॉब्लम वाज टू गेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट? अब उसमें सॉल्यूशन क्या था? अब गूगल मैप अगर आप कंसिडर करें इसको मुकाबले एक रेगुलर मैप से, राइट? सो मैं उस जमाने का हूँ नहीं जब गाड़ियों के डैशबोर्ड में स्टैंडर्ड आते थे रोड मैप्स, लेकिन इट यूज्ड टू बी अ थिंग कि गाड़ियों में रोड मैप्स होते थे. सो व्हेन यू आर गोइंग ऑन लॉन्ग जर्नीज आपको पता लगता था कि भाई मैं कहाँ हूँ, वेयर डू आई हैव टू गो, ऑल ऑफ दैट, राइट? सो गूगल मैप्स क्या किया, सबसे पहले उसने उसको डिजिटाइज किया. सो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो आपको बता देता, राइट? सो दैट वाज गूगल्स एमवीपी. इन्होंने सिर्फ ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक करने का किया. ओवर टाइम दे एडेड अ लॉट ऑफ फीचर्स because we use these services on an everyday basis. आप लोग नोट करते होंगे कि चेंजेस आती रहती है constantly, right? So इसमें फिर इन लोगों ने ये डाला कि as it says कि अच्छा shortest distance क्या है. फिर आप कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो मुझे रीराउट कर लो. फिर पेट्रोल पंप्स कहाँ पे हैं, फ्यूल स्टेशंस कहाँ पे हैं, ये सारी चीजें कहाँ पे, राइट? आप इवन गूगल मैप्स इज स्मार्ट इनफ, अगर आप उसको जो है रोजाना इफ योर कार हैज गूगल मैप्स या इट्स लिंक्ड टू योर फोन, ठीक है, if it follows your routine. For example, अगर मैं रोज सुबह ऑफिस जाता हूँ घर से, so it will note the time कि भाई इस टाइम ये बंदा आके गाड़ी में बैठा है, so Google will automatically inform me कि ट्रैफिक जो है वो ज्यादा है आज, so it might take you 5 या 6 मिनट ज्यादा या 10 मिनट ज्यादा, ठीक है, ट्रैफिक आज कम है तो आज तुम शायद जल्दी पहुंचे, राइट? सो इट्स कॉन्स्टेंटली लर्निंग, कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग. अगर इनिशियली हम देखें सो दे जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद वन थिंग, राइट? सो अगेन बार बार पूरे उसका एक्सप्लेनेशन का मकसद ये है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एमवीपी. फिलहाल यू कैन कीप ऑन एडिंग hundreds and hundreds of features into your product and your service later on with time. अच्छा जी, फिर हम दूसरे को देखें, Amazon Prime, राइट? Amazon Prime ने जो है क्या प्रॉब्लम था उसको कैसे सॉल्व किया, राइट? सो some things you need for your home you can spend a short trip getting, but other things might require thought, comparative shopping, and more time than you're prepared to dedicate in one day. More often than not, you spend your entire weekend driving from one store to the next, right? So we all know this happens. आपको let's say छोटी मोटी चीजें तो ऑनलाइन ठीक है, आपको let's say फर्नीचर लेना है तो आपने 2-3 दिन उसके लिए निकालने हैं. यू स्पेशली अगर पेशावर में है, सो प्रॉब्ली यूल चेक आउट सारी ताकाल की मार्केट जो हैं, फिर में भी जाके सत्र देखें, फिर कोहाट रोड देखें, ऑल ऑफ दोस प्लेसेस, राइट? सो Amazon सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि आप इवन वो सारी चीजें ऑनलाइन जो है उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं. देन Amazon प्राइम जब आया, सो इट्स द सेम डे डिलीवरी. आपको जो टाइम का इशू था वो तो हल ही हो गया. हमारे पास तो इतना शायद टाइम का इशू है नहीं कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न मार्केट्स, लेकिन वहां पे सबसे बड़ा इशू टाइम का. यू कांट गिव, आपके पास एक दिन होता है टू डू ऑल ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू. घर के अगर कोई काम है, ऑल ऑफ दोस चोर्स एंड एवरीथिंग, राइट? सो Amazon प्राइम उसने लिटरली वो सारी चीजें कम करके और वो एक दिन में आपको डिलीवरी करता है. एंड इन द करंट सिचुएशन Amazon हैज सीन ए सेल बूम लाइक नथिंग एल्स. व्हाई इज दैट? बिकॉज लोग अभी घरों से निकल नहीं सकते, राइट? सो पहले तो इट वाज एन ऑप्शन कि मैं घर से नहीं निकलना चाहता तो मैं Amazon से शॉपिंग कर लूं. अब बिकॉज ऑप्शन है नहीं लोगों के पास, तो पीपल आर जो है रिफरिंग टू Amazon प्राइम, राइट? सो अगेन इन्होंने इनिशियल जो अर्लियर हमने बात की, Amazon started with selling books, then they started selling everything, and now they do their deliveries in one day, 24 hours में आपको, if you are willing to pay more. So Amazon Prime का जिसका अकाउंट होता है, so they pay more for the subscription, and because you're paying more, you get the deliveries fast, right? So उसमें again, when you develop your MVP, when you add in more features to the product, you can have more sources of revenue. आप उसमें और चीजें डाल सकते हैं, आप उसमें और जो है फीचर्स डाल सकते हैं, then you can charge people for all of those features and everything. आजकल के चैंपियन ऑफ द डे फूड पांडा, सारे all of those people who just have to have घर के अलावा बाहर का खाना, right? So आजकल they have to resort to food panda, right? So you're hungry, you have nothing readily available to cook at home, and even if you did, you don't have the energy or the patience to put in the time cooking. At the same time, you're not quite sure what you want to do, right?
You don't want to spend too much time on not only figuring that out, but hunting down all the necessary contact information, calling in, and then reading your credit card over the phone, right? So again, छोटे-छोटे मसाइल स्टेट हुए हैं कि क्या एक यूजर को मसला आता है फूड ऑर्डर करते हुए. Food Panda, अच्छा, a lot of the times, even if we don't order food from Food Panda, we just open it to look for suggestions. कि अच्छा हम if you want to go eat in out, आजकल नहीं obviously. What should we eat? What should we get? What should we order? Similarly, Food Panda has encouraged a lot of local home-based chefs, right? So Food Panda की philosophy ये है कि one of the representatives from Food Panda Pakistan, she was there at the जो हमने कराया था Google business group के साथ मिलके जो हमने इवेंट कराया था BizFest. So उसमें she said कि their long-term goal is कि घर में लोग खाना पकाना छोड़ दें, right? So Food Panda वो करें, and it's not just कि वो रेस्टोरेंट से मंगवाएं. There are so many home-based cooks कि वो जो है बनाएं और आप उनके घर से घर का बना हुआ खाना मंगवाएं, right? So again, started off with one thing, and now they're empowering home-based chefs and all of these people to start their own businesses, right? So again, the most important question हम इस पे आते हैं market research पे. So सबसे पहले what you have to do. So a lot of the times when the startups come and they pitch their ideas at NIC, so they've probably heard it somewhere. They think it's a good idea. या उस maybe off the top of their head वो रात को सोए हुए थे and they had like a eureka moment and they thought I want to do this, right? So the next step is not applying to an incubator. The next step is researching your idea. So फरहाद जिस तरह बात कर रहे थे कि लॉकडाउन हुआ है, so the startups need to know कि हम कैसे रिसर्च करें, हम लोगों से पूछ नहीं सकते. So coming to that, I think 75% of your research is online these days. ठीक है, आपने सारा का सारा काम ऑनलाइन करना है. ठीक है, सब कुछ आपके गूगल पे अवेलेबल है, आपका जो है यूट्यूब पे चीजें पड़ी हुई हैं, आपके इतने ज्यादा फोरम्स हैं, आपके इतने ज्यादा ऑनलाइन directories हैं where you can find all of this stuff. So आपका 75% of the काम तो ऑनलाइन चल रहा है, right? So you don't even have to go to the market, right? So सबसे पहले you look at the entire industry. What is the industry that you want to enter, right? So उसमें find the strongest competitors in your market. ठीक है कि who is the market leader? Let's say किसी ने delivery service में जाना है, so they'll say अच्छा Deliveroo. ठीक है, so they need to observe Deliveroo. Direct competitors that provide similar services to the same customers. ठीक है, फॉर एग्जांपल Deliveroo हो गया, स्पीडी बादशाह हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ये सारे जो है आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है, indirect rivals offering solution to a similar audience, right? So अब तो करीम ने बाइक्स वगैरह शुरू कर दिया है, लेकिन people initially जब उन्होंने properly introduce नहीं भी किया था, people had this hack कि वो करीम के थ्रू डिलीवरीज कराते थे. वो कैप्टन को बुलाकर उसको बोलते यार ये चीज फलानी जगह पे दे दो. अब तो they've incorporated that into the app, right? So that could be one of your competitors. Or even organic competitors that may belong to a completely different category but fight with your website for online visibility online, right? So अब इसमें for example you're a नायाब Bro की अगर हम बात करें, she sells let's say handmade jewelry and apparel और shoes वगैरह वो सारी चीजें. So let's say Daraz, right? So she technically might not, because she's working in a particular एक small niche में वो काम कर रही है. Daraz जो है broad उसमें काम कर रहा है. But at the end of the day, if someone searches handmade leather shoes, तो Daraz भी आएगा और इनकी वेबसाइट भी आएगी. ठीक है. Similarly, और जो आपके सारे startups हैं, so there are websites that are catering to the same customers in one way or the other. So आपने उन सब के सब को जो है स्टडी करना है और उसको आपने देखना है कि what is it that makes them tick. The strongest competitor अगर है तो वो क्यों है, right? अगर आपने जो है डायरेक्ट कंपेटिटर है तो उससे जो हमने इनिशियली बात की थी वैल्यू एडिशन की. सो व्हाट वैल्यू इज इट दैट यू गाइस आर गोइंग टू ऐड कि पीपल स्विच फ्रॉम देयर सर्विस और प्रोडक्ट टू योर सर्विस और प्रोडक्ट, राइट? एंड सिमिलरली ये सारी बाकी चीजें. So you need a very, very, very deep understanding of your competitors. It's not like, a lot of the times when people, when we ask people when they pitch an idea and we say, did you even Google the idea? Do you think anyone else is doing it? So उससे हमारा मकसद ये नहीं होता कि if someone else is doing it, you shouldn't do it, right? If someone else is doing it, makes your work easier. कि लोगों ने अपना homework किया हुआ है, market testing हो चुकी है. All you have to do is replicate their model and see how can you one up them, right? So वो क्या चीज़ है कि वो आप उसमें और add करके आप उनके साथ जो है उनका कस्टमर या मार्केट शेयर वो गेन कर सकते हैं. अच्छा जी. So again, the reason why so many startups launch every day and why so few of them succeed is it's not hard to build something, it's hard to understand whether anybody needs it, right?
So this is the biggest problem we face, especially working with the startups in Peshawar. Not only NIC, दुर्शल कर लें आप, जो है BIC कर लें आप, जो है फास्ट के जो इंक्यूबेटर है उसके स्टार्टअप्स कर लें. So a lot of the time the founders build something because they want to. ठीक है, they don't go into the market and ask the customers if they need it, right? So you don't have to build a rocket ship, right? Because just because you can, ठीक है. I say this very often कि आप जो है if there's a market for it, आप ₹2 की पेंसिल बेचें, ठीक है. और if अगर ₹2 की पेंसिल है, आप उसमें ₹1 कमा रहे हैं, right? And आपकी 1 करोड़ ऑडियंस है, so that's 1 करोड़ रुपीस, ठीक है. अगर आपने उनको बेचा, अगर आप रॉकेट शिप बना रहे हैं और वो 50 लाख की आप बेच रहे हैं, there's only one customer, so that's 50 lakh rupees, right? So again, it doesn't have to be some sort of a rocket science कि आप जो है उसको एक ऐसी चीज बनाएं. आप कस्टमर से पूछें. Customers have the simplest of problems and simplest of needs, and उसका solution जो होता है वो simple से simple तरीके से आप रखें, right? एक जो बहुत बड़ा dilemma है आजकल, which I often ask startups, everyone wants to build an app for some reason, right? So why do you want to build an app? If you can achieve the same thing over a telephone or through your website, तो उसको फिर आप ऐप बनाने की क्या जरूरत है आपको, राइट? सो अगेन आप कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करें, आप कस्टमर की साइकी को अंडरस्टैंड करें. कितने कस्टमर्स हैं कि जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है? सो आई ऑफन पोज दिस क्वेश्चन कि आप लोगों में से कितने लोगों ने अदर देन सोशल मीडिया और फोटो एंड वीडियो एडिटिंग एप्स, ठीक है, पिछले 1 साल में आप लोगों ने कितनी एप्स डाउनलोड की? So most of the times the answer is 1 or 2 people say that they have, right? So again उस चीज को आप देखें कि what the customer needs, what he requires, और उसकी जो है psyche क्या है, what is it that the customer wants to achieve by using a product and service, right? So a pro tip would be कि never ask your mom about your idea, right? So it's not just your mother, it's your friends, it's जो है बाकी जो आपके यार दोस्त हैं सारे. क्योंकि the thing is, for some reason we don't like to discourage our friends. एक आध दोस्त इस तरह होता है कि जो कहता है टाइम ज़ाया करो फलाना फलाना, लेकिन most of the times when we ask our family and our friends, तो वो कहते हैं कि उनके जो remarks होते हैं they're always quite encouraging, right? वो यही कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है कर लो this and that. इसकी एक सबसे बड़ी रीजन जो होती है, even if you ask your class fellows, let's say if someone is not a very good friend, आप उससे generally पूछ सकते हैं, and they'll say कि हाँ हाँ बहुत अच्छा idea, you should do it, right? They're saying that because they're not having to pay for it, ठीक है? वो मुफ्त का मशवरा आपको दे रहे हैं. अगर आप उनको एक चीज बेच रहे हैं और आप उन्हें बोलेंगे ये चीज मैंने बनाई है, ये तुम खरीदोगे, and they're like हाँ हाँ मैं बड़ी अच्छी चीज है मैं तो खरीदूंगा, and when you sell it to them, उसे बोलोगे हाँ निकालो ₹100 ये चीज लो, then you'll find out कि is that person actually willing to buy it from you or not, if it's a good idea or not, right? So हमेशा आप जो है इस तरीके से पूछें. दूसरी जिस तरह नीलम का जो सेशन हुआ था बायसनेस पे, so this is very important. आप जिस लोगों से पूछते हैं उनकी बायसनेस can make it or break it, right? If they're biased towards your idea, if they're biased towards you as a founder, ठीक है, उनका जो feedback होगा that's going to be totally different, right? As compared to if they don't know who you are, if they don't know what you're going to do, ठीक है? So इसमें always keep your surveys anonymous, ठीक है? मतलब कि आप ये ना करें कि आपके जो कोहर्ट का ग्रुप है उस पे आप कर देंगे जी मैं सर्वे कर रहा हूँ, आप इस पे, so everyone knows who you are, ठीक है? वो आपको देखते हुए सर्वे फिल करेंगे, right? So the right idea always is कि आप वो सर्वे अपने किसी दोस्त को भेजें और उसको बोलो कि यार आगे अपने दोस्तों को भेजें. So I've received a lot of surveys like that. पिशावर में unfortunately बंद हो गया कुछ साल, तो वो चला था Central Park, the cafe that opened, right? So Central Park जब खुला था, a friend of mine sent me an anonymous survey और वो it was about Central Park, उससे I could figure out. लेकिन वो anonymous था बिल्कुल. I had no clue ये कौन करा रहा है, कौन खोल रहा है. I still don't know who the owner of the cafe was. लेकिन that's how they did it कि वो anonymously उन लोगों से पूछा. So that's what you need to do कि लोगों को पता ना चले कि अच्छा इसमें दूसरी आपने anonymity ये भी रखनी है कि लोगों को directly ये भी पता ना चले कि what are you going to do. So उसका हमेशा idea ये होता है कि you throw in a couple of misleading questions, right? क्योंकि again the human brain it starts connecting dots. The moment उसको लगता है कि यहाँ पे कोई pattern बन रहा है, वो चीज dots connect करना शुरू कर देता है, and then उसकी biases शुरू हो जाती है. वो कहता है कि वो अच्छा ये तो ये करना चाह रहा है यार, ये तो मेरे चाचे का बेटा भी कर रहा है, इसको मैं कहता हूँ कि ये business तो कामयाब नहीं है, this and that. Right, so a lot of biases comes in. So उसमें just to throw them off your lead, you have to throw in a couple of dummy questions कि उससे वो जो है left right हो जाएं. They can't really
know, okay, what are you trying to ask, right? Overall theme क्या है? So you concentrate on individual questions कि भाई अच्छा आपको for example दरिबड़ों की हम अगर दोबारा example लें, so do you have issues with Peshawar's traffic? ठीक है. Do you have let's say would you pay for a service जो कि आपका जो आपको that helps you get rid of the traffic, right? So again directly नहीं लिखा हुआ कि भाई how will we get rid of the traffic, right? अच्छा फिर जो है how much will you pay for example such a service, ठीक है. फिर बीच में कोई left right question random डाल दें, ठीक है, कि how many times do you order food online or उस type of, so people saying it's probably something to do with food delivery and stuff, right? So उस type की चीजें आप रखें, जितनी आप anonymity रखेंगे उतना आपको बेहतर feedback मिलेगा लोगों से. So some of the tools that you guys can use, it's जो है, let me just actually quickly go back to the slide क्योंकि ये I think save नहीं हुई. हाँ, so this is the updated one. No, it's not. I did just, oh, so this is the next one is the updated slide. Let me just quickly delete this. Okay, there we go. So for research surveys, you can conduct these via Google Forms. That is the most basic of things. लोगों को पता नहीं चलता कौन conduct करा रहा है. You just make a couple of questions. उसमें आपके जो है descriptive questions होते हैं. उसमें आपके जो है number line वगैरह आप डाल सकते हैं. वो सारे कुछ आप चीजें कर सकते हैं. You send it to someone anonymously. आप different forums पे post करें. There are so many groups online on Facebook these days. किसी को बोले आपके behalf पे post कर दे, right? So all of those things can be done. Principally सर्वे मंकी है, सर्वे आयो है, टाइप फॉर्म है. So ये सारे वो वेबसाइट्स हैं जो कि आप जो है उससे कर सकते हैं, जो सर्विस के लिए आप यूज कर सकते हैं. So the next two websites that are pretty important, I've actually read about them last night, are they're based in the US. तो ये आपको वहाँ की मार्केट का बताएगा, लेकिन it is very important that you go through this website और आप at least इसको ट्राई करें कि आपको एक फीलर आए मार्केट रिसर्च का, right? So SEM Rush Market Explorer में आप जो है कीवर्ड्स डालते हैं और वो आपको उस तरह के सारी की सारी चीजें बताया जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो कि उस कीवर्ड से एसोसिएटेड काम कर रहे हैं, उनकी अगर सेल्स फिगर्स हैं वो क्या हैं, वो कब शुरू हुए, कब वो पीक पे गए, कब वो खत्म हुए. सो ऑल ऑफ द डेटा दैट इज अवेलेबल वो आपको एक पे कर देता है, राइट? सो इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. उससे एक जो सिंपलर वेबसाइट है दैट इज उबर सजेस्ट, राइट? सो उबर सजेस्ट में भी अगेन यू पुट इन कीवर्ड्स और वो आपको अकॉर्डिंगली जो है वो हिट्स आती हैं और वो आपको जनरेट करके देता है about all the businesses, all the queries जो के उसके मुताबिक लोगों ने की हुई हैं, right? अच्छा जी. So coming back to a couple of examples, so इसमें ये है कि even big brands make mistakes, and unfortunately for them, those mistakes often end up in the headlines. Fortunately for us, these are great examples of what not to do. ठीक है? So again, उनको शायद इतना फर्क ना पड़े if they make these mistakes because they're quite frankly big companies, but the startup cannot afford to do those mistakes if they don't do their research properly, right? So सबसे पहले let's start with our favorite mushroom, not particularly आजकल, but Coke introduced new Coke. ठीक है? So after testing a new recipe with over 2 lakh subjects and finding that people preferred it over the traditional version, Coca-Cola unveiled new Coke in 1985. Sounds like a safe move, but wrong. Product loyalty and old-fashioned habit got in the way, and people did not buy the new Coke as expected, costing the company $4 million in development and loss of $30 million in backstock product it couldn't sell, right? So Coca-Cola जैसी company, ठीक है? So again, whenever we go to a restaurant and we ask the waiter कि Coke है, and वो कहता है सर Coke तो नहीं है, Pepsi चलेगी, and you say नहीं Pepsi नहीं चलेगी, and you order something else, right? So again, that's बिल्कुल the basic thing that Coke sort of ignored, right? The taste or the flavor of Coke that people are used to. They thought कि इसमें हम एक नया twist ले आएंगे तो people might like it. उनका so what happened is, what was the lesson learned? They did do their market testing. उन लोगों ने 2 लाख लोगों को टेस्ट तो कराया था, but what went wrong? ठीक है. While Coca-Cola certainly did market research, they missed the mark when it comes to assessing customer motivations. Customer input is imperative in development, and for your project to be successful, you need to ensure you have a way to gather comprehensive customer insight that gives accurate, realistic information. ठीक है? So customer के behavior को आप कभी overlook नहीं कर सकते, right? So जो 2 लाख लोगों के साथ testing की,
that was not a big enough sample set के उसमें से उन लोगों की behavior और लोगों के associations का पता चल सके. So आगे हम जाके customer personalities और उस पे भी बात करेंगे, how can you make customer profiles and all of those things so that you are in a better position to understand who your customer is, right? So similarly, Apple did the same thing. They launched the Apple Newton back in the day, which was a PDA. आजकल तो सबके सब जो है touch phones है हमारे पास. Every phone is a PDA these days, right? So when Apple launched this device, it was way ahead of its time. ठीक है, उस वक्त लोग जो है people made fun of the device के ये लोग जो है आपको I can have an Apple Newton in let's say $4-5 by purchasing a pad and a pen, right? So Apple did the same thing, but it was electronic and it was pretty expensive at the time. But Apple thought कि नहीं, वो लोगों को एक learning curve है, लोग सीख जाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने उसको उस चीज को underestimate किया, right? So again, market research will tell you that consumers are enthusiastic about potential new technology product, but if only the product works as advertised, if you can't meet their expectations, your product is doomed to fail, no matter how high those expectations were. So Apple ने initially ये भी किया था कि इन लोगों ने इस चीज में incorporate की थी कि लोग voice command डालेंगे जो they couldn't do. इसमें ये भी था कि ये आपको trace करेगा. If you write something, so it will read कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है. It will read script और उसको ये जो है font में convert करेगा, which again it was not able to do so well, and वहाँ पे they failed miserably for the product to succeed. So Pepsi did the same thing that Coke did. They made a Pepsi Crystal. So off the top of my head, I don't know why would they do that, right? So एक consumer के तौर पे मेरी जो basic decision होती है whenever I go to a restaurant, so I have to decide if I want a sort of a cola black drink or if I want a clear drink, right? So that's the basic thing. If I want a cola, so that's then an option between Coke or Pepsi, right? So if you take away the color from Pepsi, so how is that a wise decision, right? So why Pepsi जो है और जो अपनी चीजें बना रहा है, बाकी जो clear drinks वो बना रहा है, so why can't people just have then 7-Up, Sprite and all of those things, right? So when Crystal Clear Pepsi debuted in the mid 1990s, clean and pure were the buzzwords, right? So Crystal Pepsi was a hit at first, and people were excited about the new version of an old favorite, but people soon lost interest and the novelty wore off. Okay? So short-term gimmick था, लोगों को initially पसंद आया, but long-term उसकी sustainability थी नहीं, right? So the lesson learned was Pepsi had used market research to conjure a niche market and consumers craving visually different but similar tasting caffeine-free version of Pepsi, where once Pepsi जो कि niche actually exist ही नहीं करती थी. So अभी आजकल देख रहे जो Pepsi का है, I think it's Pepsi Zero or Pepsi Black or something जो कि black उसमें आता है, and it's actually the same thing जो कि Crystal Pepsi कर रही है. It's sugar-free and all of those things, but the color and the taste are absolutely the same जो कि Coke है. So इनको जो है इनके जितने आपके वो थे the lesson learned इसमें जो था कि जितने इनके suppliers थे, bottlers थे, उन्होंने इनको warn किया था कि यार this thing is not going to work, right? So उस वक्त लोगों ने सुनी नहीं. So इसमें the basic takeaway is कि आपके जितने surrounding environment में लोग हैं, you have to listen to them as well. अगर आप इस तरह का एक product बना रहे हैं, let's say you're a designer, ठीक है, and you design Eid cards, right? So you design them and you send them to your printer, ठीक है, और वो आपको कहता है कि नहीं, this is not a good idea, आजकल जो है market में ये चीज नहीं चल रही, लोग नहीं बिक रहे, so you need to listen to what he's saying, ठीक है, उससे पूछेंगे भाई वो क्यों बोल रहा है, ठीक है, ऐसी क्या वजह है कि आजकल मार्केट में ईद कार्ड्स नहीं चल रहे, ठीक है, you designed it very well, ठीक है, visually वो बहुत appealing है, you know there's a market for it, लोग ईद कार्ड्स भेजते हैं, लेकिन what if he says कि यार आजकल तो लोग ईद कार्ड WhatsApp पे ही भेज देते हैं, ठीक है, या फॉर सम रीजन आजकल प्रिंटिंग इंडस्ट्री डाउन है, राइट, या कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल जब इलेक्शन के दिन होते हैं, सो द प्रिंटिंग इंडस्ट्री गोज क्रेजी, सो ऑल दो स्टार्टअप्स हु आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री, वो जो है दे कांट वर्क, क्योंकि कोई काम नहीं लेता, बिकॉज एवरीवन इज बिजी प्रिंटिंग इलेक्शन के पोस्टर्स, इलेक्शन की कैंपेन वाली चीजें, सो दे डोंट, वो आपको टाइम ही नहीं देते, राइट. सो अगेन कुछ मार्केट टाइमिंग इस तरह है, मार्केट डायनामिक्स इस तरह हो जाते हैं कि उसमें यू हैव टू लिसन टू एवरीवन, जो आपके अगर कोई वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, यू हैव टू लिसन टू ऑल ऑफ दोस पीपल अलोंगसाइड योर कस्टमर्स एज वेल, राइट. So now coming to the probably the most important point, that is who is your customer, right? Is the opportunity worth validating? ठीक है, आपका customer जो है, is he or she willing to pay for that opportunity, right? So we'll dive deep into customer profiles and all of those things now, ठीक है.
So a startup does not exist in the entrepreneur's mind alone. A startup exists in the landscape of customers and potential customers. Okay? So if there will be people buying or using your product, you need to learn all about them. Okay? You need to learn all about these people, from these people, and for these people. Okay? Democracy वाला हिसाब है. Okay? Your business will live and die on based on their receptivity of the product. वो किस तरह receive करते हैं आपके product को, ठीक है, और service. The sooner you learn about your customer, the faster you'll be able to adapt and serve them better. अभी a lot of the times the biggest challenge we have कि अभी भी अगर मैं आप लोग में से सबसे पूछूंगी who is your customer, right? So I will get very vague replies from everyone. ठीक है. Most of the times when we ask startups कि आपका customer कौन है, so the usual reply is everyone. Let's say जो Facebook पे हम ads boost करते हैं, ठीक है, so उस तरह का reply होता है 18 to 60 पेशावर में जो रहते हैं या पाकिस्तान में जो रहते हैं for that matter, and that's it, right? So people do not consider कि भाई 18 to 60 जितने हैं पाकिस्तान में, उनमें कितनी डिफरेंट किस्म की वर्किंग क्लासेस हैं, उसमें कितने डिफरेंट किस्म के लोग हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी से 18 to 60, उसमें स्टूडेंट्स भी आ गए, उसमें वर्किंग लोग भी आ गए, उसमें रिटायर्ड लोग भी आ गए, राइट? सो दैट्स 3 डिफरेंट सब ग्रुप्स राइट देयर. अच्छा, फिर अगर हम सिर्फ एक वो लेते हैं, सब ग्रुप लेते हैं, लेट्स से पीपल हु आर ऑफ 30 years of age, राइट? सो आर दे अनएम्प्लॉयड, आर दे एम्प्लॉयड, ठीक है, क्या वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, क्या वो जो है पॉवर्टी लाइन में वो कहाँ वो करते हैं, क्या उनका कैन दे अफोर्ड योर प्रोडक्ट, ठीक है. अगर उनके बच्चे हैं, बच्चे उनके गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल जाते हैं, अगर वो जो है लेट्स से कहीं घूमने फिरने जाते हैं, सो वो उनकी पहुंच जो है लेट्स से फैसल मस्जिद तक है, या वो जो है एम्स्टर्डम जाएंगे घूमने के लिए. सो इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं which people just do not take into account, right? So I always say आपकी मार्केट रिसर्च तब सक्सेसफुल होगी कि मैं आपके सामने एक बंदा खड़ा करूं, ठीक है, वो आपसे 2-3 बातें करें, and you should be able to tell कि ये बंदा आपका कस्टमर है कि नहीं है, right? Looking at how the person is dressed, what the person is wearing, how the person talks, उसने बालों में जेल लगाई हुई नहीं लगाई हुई, उसने जो है दाढ़ी उसकी ट्रिम्ड है, अनट्रिम्ड है, कपड़े उसके साफ हैं, कल्फ हुआ है, इस्त्री हुई है. So all of those visual aids, ठीक है, वो बात करता है, ठीक है, so वो किस टाइप की बातें कर रहा है, ठीक है, is he talking about more important stuff in life, कि वो कह रहा है कि भाई मैं I'm struggling कि मैं घर में 2-3 टाइम का खाना पूरा कर लूं, या वो लग्जरीज की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं मर्सिडीज लेनी है, मैंने पोर्श लेनी है, मैंने रोल्स रॉयस लेनी है, वो सारी चीजें. So वो सब कुछ आपने जो है टेक इनटू अकाउंट करना है, और उसके बेसिस पे आपने अपनी कस्टमर प्रोफाइल बनानी है, और उससे आपने कस्टमर को कंपेयर करना है. Excuse me. So know your customer, defining customer jobs, pains, gains and profiles and the value map, right? So सबसे पहले हम करते हैं customer jobs पे हम आते हैं. Customer job क्या चीज़ है, right? So a customer job could be the task that they are trying to perform and complete, the problem they are trying to solve, or the needs that they are trying to satisfy, right? This is in accordance to your product or service, ठीक है? Customer jobs are often dependent on specific context in which they are performed. For example, you should understand the difference between going to the movies with kids and going to the movies with your partner, eating at home for comfort, and booking a table in advance at a restaurant for an aesthetic and experiential value. ठीक है. अब again, for those of you who are married and those of you who have kids, they know that when they go to the cinema to watch a movie with their kid, it's going to be very different. They'll probably watch something, let's say Finding Nemo, yeah, wo cars, yeah, planes, yeah, they're probably going to watch something like that, right? If they're going to watch something with their wife only, it could be something totally different, okay? Then they can watch a grown-up movie, okay? उस टाइप का कुछ भी कर सकते हैं. If they're going to do that and they have a kid, so either they're going to leave it with some of their relatives, या वो कोई babysitter hire करेंगे, right? So if अच्छा कुछ लोगों के पास ये luxury भी नहीं है कि if they want to go and watch a movie alone as a couple, but they have kids, they can't afford a babysitter, right? So again, is there something that you can give them, ठीक है? Let's say Netflix, कि बच्चे को सुला के फिर they can watch a movie, right? So again, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप आइडेंटिफाई करें कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं. एक ही फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक कपल की बात कर रहे हैं, सो वो एक ही कपल के डिफरेंट जो है माइंडसेट होगा इन बोथ सिचुएशंस, राइट? जब वो बच्चे के साथ मूवी देखने जाएंगे और जब वो अकेले मूवी देखने जाएंगे, सो उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होगा. सो यू हैव टू गो टू सो मच डेप्थ
कस्टमर बिहेवियर में कि आप एक एक कस्टमर की बिहेवियर तक आपको पता हो, लेट अलोन के ओवरऑल एक डेमोग्राफिक आप बताएंगे भाई ये एक पूरा सबसेट जो है ये मेरा कस्टमर है, राइट। सिमिलरली जो हमने रेस्टोरेंट की बात की कि अगर इफ यू वांट टू जस्ट ऑर्डर फूड एट होम, राइट, सो यू डोंट हैव टू ड्रेस फॉर इट, ठीक है, आप कुछ पिज्जा मंगवा लें, आप कुछ भी सब टाइप की कोई फास्ट फूड मंगवा लें, इस टाइप कुछ आप स्नैक मंगवा लेंगे। इफ यू वांट टू गो समवेयर आउट तो देन यू आर गोना मेक श्योर कि भाई आप तैयार हो, ठीक है, आप तैयार होके जाएं, एंड देन इफ यू आर स्पेंडिंग मनी सो इट्स वर्थ इट एंड एवरीथिंग, राइट। सो अगेन ये सारे बिहेवियर और वो पैटर्न्स आपने जो है रिकॉग्नाइज करने अपने कस्टमर्स के बारे में कि भाई वो क्या चीजें हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं प्रोडक्ट या सर्विस से। अच्छा जी, so some of the trigger questions that you can ask your customers about customer jobs, ठीक है, so you can probably ask them what is the one thing that your customer couldn't live without accomplishing, ठीक है। so ये वो questions सॉरी जो आपने खुद से पूछने अपने customers के बारे में, right। so what are the stepping stones that you could help your customers in achieving this key job, right। For example, जो मैंने कहा कि they want to spend some time with their spouse watching a movie, ठीक है, but they don't want to be bothered with their kids, ठीक है। So क्या कर सकते हैं, आप कोई बेबी सिटिंग सर्विस शुरू कर सकते हैं, या आप उनको घर में कोई सिनेमा बना के दे सकते हैं, या आप कोई ड्राइव थ्रू टाइप थिएटर बना सकते हैं, राइट। Similarly, what are the different contexts that your customers might be in? How do their activities and goals change depending on these different contexts, right? जो हमने earlier बात की कि having food at home versus having food at a restaurant, right? So again, if you guys want, I'll be sharing this presentation with you as well, or I can particularly share the slide with you guys, so you can go through all of these questions. उसमें आप देख सकते हैं कि क्या trigger questions हैं जो will help you understand better customer jobs जो कि आपके customers करना चाहते हैं, right? So for example, how do your customer want to feel? Does your customer need to feel this way, right? So again, all of these sort of in-depth psychological questions and profiling of your customers that needs to be done on your part. अच्छा जी, फिर हम आते हैं customer pains पे. So what are customer pains? After you understand how you can improve the lives of your customer base, then you need to understand the root of the inconvenience. ठीक है? Find what's really bothering them. ठीक है? क्या मसला है उनको? ठीक है? मतलब कि उनको जो चीज चाहिए थी वो तो आपने उनको दे दी, लेकिन initially what is the root of the problem? ठीक है? Understanding the main fears of your target audience will give them an insight into why customers could abandon your product. ठीक है? अगर कोई आपके प्रोडक्ट पे स्विच हुआ है, राइट, तो वो भी तो दूसरा प्रोडक्ट छोड़ के आया है. सो व्हाट आर द थिंग्स कि जिससे आपका कस्टमर अनॉय होता है आपके जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, राइट, उसमें वो कौन सी चीजें हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं उसकी एग्जांपल दूं आपको, NIC पेशावर की टीम we're using Zoom for all of our communication, हमारी जो वीकली मीटिंग्स होती हैं. So one day we tried, I tried एक Microsoft Teams पे कॉन्फ्रेंस थी, वो मैंने ट्राई की, and it was a total pain. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, because it was not very user friendly. Last week the NIC team we tried to do a meeting on Google Hangouts, and everyone unanimously said कि नहीं, Hangouts is not as comfortable जितने हम Zoom के साथ comfortable, right? So we sort of abandoned the product. ठीक है, हमने Google उसको Hangouts को छोड़ के and we moved back to Zoom. ठीक है. So उसमें ये चीजें आपने देखती हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिससे you risk the customer abandoning your product or service, right? So in the end, you will have to have information about what annoys your customer before, during, and after trying to buy something. ठीक है? Using this knowledge, you can overcome buyers' main barriers and whatever else stands in the way. ठीक है? For example, a lot of the times, is there a learning curve? ठीक है? ये especially उन products के लिए है कि जो अब let's say आपने IKEA से टेबल लिया, you have to assemble it yourself. ठीक है? अब if the instructions are not clear enough, ठीक है, अब IKEA की तरह का रिप ऑफ फर्नीचर चाइना में बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन जो उनके साथ एक तो या इंस्ट्रक्शंस आती नहीं है, या इंस्ट्रक्शंस जब आती हैं तो वो एक ऐसी किस्म की अंग्रेजी में लिखी होती हैं कि जो इंसानों की समझ से तो बाहर होती है, राइट. सो अगेन दैट इज प्रॉब्ली अनोइंग. ठीक है, अगर आपने उस टाइप के प्रोडक्ट्स आप जो है ऑनलाइन बेच रहे हैं, आप चाइना से मंगवा रहे हैं, यू हैव एन ई-कॉमर्स स्टोर, आप उसको बेच रहे हैं, सो प्रॉब्ली अ गुड थिंग दैट यू कैन डू इज आप उसका लोकली मैनुअल लिखना शुरू कर दें. ठीक है, आप एक प्रोडक्ट को खुद फिट करें और आप देखेंगे हाउ डज दिस वर्क. आप उस प्रोबेबली जब आप अब एक प्रोडक्ट बेचना है, आप उसकी ट्यूटोरियल वीडियो साथ में लिंक भेज दें. ठीक है, एक आप थैंक यू कार्ड लें, उसके ऊपर आपने लिंक भेजा, आपने कस्टमर को भेजा कि दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली फिट दिस प्रोडक्ट, राइट. सो दैट गिव्स यू एन एज ओवर अदर पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग, जो चाइना से चीजें मंगवा के ऑनलाइन स्टोर पे बेचते हैं. दिस जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल. और इस तरह की काफी चीजें हो सकती हैं कि जिसमें आपने लोगों को कन्वीनियंस देनी है एंड हेल्प ईज देयर प्रॉब्लम्स और उनको और मुश्किल में ना डालें.
So again, इसमें कुछ हमारे पास customer pain के कुछ trigger questions हैं, right? So how do your customers feel कि costly क्या चीज़ है, right? Takes a lot of time, costs a lot too much money, or requires substantial efforts, right? So when we say cost, right? So हमारे ज़हन में सबसे पहले पैसे आते हैं, ठीक है? So for a lot of people, money is not a problem. वो कहते हैं कि यार मुझे time का बहुत बड़ा issue है, ठीक है? जैसे हमने earlier Amazon की बात की, so Amazon की एक सबसे बड़ी success यही थी कि उनके customers वो लोग थे जिनके वो time का बहुत बड़ा मसला था, ठीक है? So उनको वो चीज़ speedy Amazon Prime ने deliver करना शुरू की, और for example अगर एक चीज़ है, दरअसल अगर मैंने कोई चीज़ मंगवानी है, so वो यूजुअली अगर 3-4 घंटे लगाते हैं, एंड आई टेल देम कि भाई तुम ऐसे करो, मेरा ऑर्डर प्रायोरिटाइज करो, मैं तुम्हें 200 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, आई डबल योर रेट, लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए, राइट? सो इन दैट मोमेंट मनी इज नॉट माई कॉस्ट इज टाइम, क्योंकि मुझे वो चीज़ जल्दी चाहिए. लेट्स से मुझे यूएसबी मैंने प्रेजेंटेशन करनी है, आधे घंटे में प्रेजेंटेशन शुरू हो रही है, आई एम एट कॉन्फ्रेंस, और मुझे वो यूएसबी घर से मंगवानी, राइट? सो उस वक्त द कॉस्ट इज टाइम, इट्स नॉट द मनी. सो अगेन आप लोगों ने ये देखना है कि आपका जो कस्टमर सेगमेंट है, राइट? फॉर एग्जांपल आपका वो, अब फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी बात करें, जो एरियल और बोनस की हम बात करते हैं, या जो आपका ऊपर वाला ब्रांड होता है, वो जो सब ब्रांड्स बनाते हैं, सो व्हील बनाना, एरियल बोनस बनाना, इन लोगों ने वही पेरेंट कंपनीज जो कि हाई क्वालिटी वॉशिंग पाउडर्स बना रहे हैं, उन्होंने लो क्वालिटी इसलिए बनाए क्योंकि उनका जो एक सर्टेन कस्टमर है, they are very sort of cost conscious, कि भाई मुझे अच्छी चीज चाहिए लेकिन मुझे सस्ते दाम चाहिए, राइट? और जो आपका हाई लेवल के लोग हैं, they don't care, they care कि भाई उनके कपड़े साफ हो रहे कि नहीं हो रहे, whatever it takes they will pay for it, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फॉर्मूला दैट यू डेवलप्ड जिससे कपड़े बहुत अच्छी तरह साफ होते हैं, ठीक है? बट उसमें यह है कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मूला कि उसमें वो 5 अलग पैकेट्स हैं, आपने उनको स्पेसिफिक रेशियोज में मिक्स करना है, और उससे फिर आपने एक लिक्विड बनाना है, उसको फिर आपने वॉशिंग. सो अब देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि उस चीज को नहीं ग्रैब कर सकते, या अगर अ लॉट ऑफ पीपल जो घरों में खुद कपड़े नहीं देते, उनके घर में कोई आता है कपड़े धोने के लिए, एंड दे आर नॉट लिटरेट इनफ टू फिगर इट आउट, राइट? सो उसमें वो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है. सो एज यू गाइस, वो ट्रेजेक्टरी आप लोग समझ गए होंगे कि अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स इज अ वेरी टफ जॉब. आप लोगों में से each and every one will have to go through this exercise of understanding the behavior, the pains and the gains of your customers in very detail. तब जाके जो है you will be able to target them. For example, Facebook पे आपने targeting करनी, तो फिलहाल तो आप किसी भी targeting नहीं कर सकते, right? So 18 to 60 kpk is not a very good target market to boost your ad. आपके सारे पैसे जाएगा, right? So ये सारी चीजें आपने understand करनी है. What makes your customers feel bad? What are their frustrations, annoyances and things that give them a headache, right? So ये सारी चीजें आपने understand करनी है. Again, बारी-बारी you can go through all of these in detail. ठीक है? What are the barriers? अच्छा, number 9. What are the barriers? What barriers are keeping your customers from adopting a value proposition? Are there upfront investment costs? ठीक है? Steep learning curve या other obstacles in preventing adoption? ठीक है? मतलब कि क्या मसाइल हैं कि वो आपका वो नहीं, जिस तरह मैंने earlier बात की कि maybe they want to buy a Chinese IKEA rip-off table, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही कि उसको किस तरह put together करें. So you give them the tool to understand and to help solve their problem, right? So ये सारी चीजें आपने A to Z अपने customers के against वो करनी है. अच्छा जी, did we not already do customer gains? Sorry, customer pains, customer gains. Oh, sorry, customer jobs. I'm a little bit रोजा लग रहा है मुझे. अच्छा जी. So the benefits could very well be. So सबसे पहले हमने देखा कि कस्टमर अचीव क्या करना चाहता है, कस्टमर जॉब्स क्या है, ठीक है? आपके प्रोडक्ट या सर्विस से वो क्या चीज है जिससे वो अचीव करना चाहता है, whatever they want to achieve, ठीक है? फिर उसकी एडॉप्शन में उसको क्या मसले मसाइल हैं, ठीक है? या वो कोई मसला सॉल्व करना चाहता है, या उस जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है उसमें कोई मसला है, या आपके प्रोडक्ट को इसलिए नहीं स्विच कर रहा कि उसको कोई मसला है, राइट? सो ऑल द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव. अब हम आएंगे कस्टमर गेन्स पे. व्हाट डज द कस्टमर स्टैंड टू गेन आउट ऑफ द सिचुएशन, राइट? So benefits could very well be different for everyone. Some want to save money, जिस तरह हमने earlier बात की कि किसी के लिए time important है, किसी के लिए पैसे important है. Others time and even others who won't see the value in buying your product or service without
the promise of some extra incentive in return. कुछ लोग कहेंगे कि यार साथ में मैं सर्फ का पैकेट ले रहा हूँ लेकिन मुझे जो है लेस के 2 पैकेट ना मिले तो मुझे इसमें कुछ वैल्यू नजर नहीं आ रही, राइट? सो देयर आर पीपल आउट देयर. So again, to understand how to satisfy your potential client or customer, you need to understand what motivations will inspire them to consider a purchase without you ever having to force the issue, right? So आपने उन पे impose नहीं करना और वो जो है readily आपका product क्यों खरीदेंगे? So again, अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखें, which savings would make your customer happy, right? Saving in terms of again time, money, efforts. ठीक है, फिर what quality levels do they expect, right? What they want, and what would they wish for more of it or less? ठीक है. अब personally, let's say when I go shopping on AliExpress, ठीक है, मेरा मकसद ये होता है कि सबसे पहले I think most of us do the same कि we see कि भाई सबसे सस्ती चीज मुझे मिल जाए, ठीक है. इफ आई एम लुकिंग फॉर माउसेस, मैं कहूंगा भाई $10 का मुझे माउस मिल जाए. अब एक $10 का मुझे माउस मिला, एक मुझे मिला $50 का. अब $50 में फंक्शंस बहुत ज्यादा, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच ऑन अ माउस, ठीक है. $10 वाले भी काम करेंगे, बट देयर इज अ वन जो कि $25 का है, उसमें इट्स सॉर्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी, ठीक है. आई थिंक आई हैव सेव्ड इनफ मनी कि मुझे वो एक वो हो रहा है साइकोलॉजिकली कि भाई तुमने $50 वाले फंक्शंस वाली चीज तुमने उसकी खरीद ली, ठीक है. अब डीप इनसाइड आई माइट नो इट माइट नॉट लास्ट दैट लॉन्ग, ठीक है, लेकिन उस वक्त दैट्स ऑल आई कैन अफोर्ड, ठीक है. उस वक्त मेरी जरूरत वही है, ठीक है. सो देयर आर सम पीपल हु वुड लाइक टू स्पेंड मोर, ठीक है. वो कहेंगे कि यार नहीं, मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है. लॉट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखते हैं, सो एक ही तरह की 2 प्रोडक्ट्स होंगे, एक की क्वालिटी अच्छी होगी, दूसरा फेक होगा. फॉर एग्जांपल talking to the ladies, जो fake आपके handbags होते हैं, right? So everyone's got let's say fake Louis Vuitton and Armani and all of those. I don't know if Armani even makes bags, right? लेकिन वो सारे जो fakes होते हैं, so some people are okay with it, ठीक है. वो कहते हैं कि it's okay if people find out कि it's fake, वो देख के पता चल जाता है कि if it's fake or it's real, right? But for them it holds value, ठीक है. For them maybe fooling 10% of the population who can't figure out it's a fake, उनके लिए वही काफी है, right? And there's some people who will go to any lengths कि नहीं, मैंने तो ओरिजिनली लेना है क्योंकि लोग मेरे साथ ये एसोसिएट करते हैं कि भाई ये तो इसने फेक चीज ली है, right? So why should I buy a fake thing? I should buy something that's totally branded, right? So again, कस्टमर की साइकी वाली जो है सारी की सारी इसमें बात है. वही जो सारे ट्रिगर क्वेश्चंस हमारे पिछले उसमें थे, so उनका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके we've come to वही to the gain part rather than the pain part. Okay, again moving on to the last question, what would increase your customers' likelihood of adopting a value proposition? Do they desire lower cost, less investment, low risk, or better quality, right? So again ये सारी चीजें आपने अपने customers के बारे में पूछनी है और उनसे करना है. So जब ये सारी की सारी चीजें information data आपके पास आ गया, right? So then we make a customer profile, right? So each customer needs to have their own profile, right? So you should use all of this information that you've gotten from these questionnaires and compile it all in one place. Use this canvas जो कि आपको यहाँ पे साइड में नजर आ रहा है, gains, pays and customer jobs, ठीक है. But remember, one customer, one profile. हम ये नहीं कह सकते इसमें कि भाई ये जो मेरे पास डेटा आ गया ये मेरे पूरे सबसेट का है, ये पूरा जो मेरी पूरा का पूरा सैंपल है, all of my customers, these are all of my customers. No. So each profile for one customer. So now you know कि भाई it is a very hard job doing market research and particularly identifying your customers. क्योंकि अगर आप 100 प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि लोग कहते हैं कि जी हमने 100 बंदों से क्वेश्चनेयर फिल कराया. आपने 100 बंदों से एक यूनिवर्सिटी में खड़े होकर एक ही डेमोग्राफिक के लोगों से क्वेश्चनेयर फिल कराया, तो यू डोंट इवन नो अबाउट दिस पीपल जिन्होंने क्वेश्चनेयर फिल किया, राइट? उनका डे टू डे बेसिस पे उनके कस्टमर जॉब्स क्या हैं, पेन्स क्या हैं, गेन्स क्या हैं, यू डोंट नो एनीथिंग एंड दे रैंडमली फिल्ड अ क्वेश्चनेयर अबाउट योर स्टार्टअप एंड ऑन दैट बेसिस यू आर गोइंग टू bet the next year or 2 years of your life trying to work on that. So again, play it smartly. आप उसकी पूरी एक profiling करें. Before someone fills your questionnaire, you need to know ये बंदा है कौन, ठीक है? कौन बंदा है कि जो मुझे इस पे feedback दे रहा है, क्या ये मेरी target audience है भी कि नहीं है, right? So you need to have customer profiles on most of your customers. Then you could go in depth and create a wider profile that would include hard factors such as age, sex, education level, income level, as well as
soft ones like temperament, sensitivity, or curiosity. Don't forget to think about places that they visit, books they read, films they watch, and any other cultural influence that you can add. जो basically Facebook आजकल कर रहा है, Facebook knows what we've watched, Facebook knows where we've been, उसके accordingly वो हमें जो है ads target करता है, ads pitch करता है. So that is more or less what you guys need to do as well. अच्छा जी, so customer research के लिए there are two techniques that I would like to discuss with you. एक is just as simple as watching people without being a creep, right? So you don't have to be a stalker or creep people out. लेकिन just observe. People watching से मकसद ये है कि it's just an observation. आप देखेंगे लोग कर रहे क्या, right? So again, सबसे पहले जो हमने customer profiles की बात की, उस सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए, ठीक है? So you look at a person and you say कि is the person male or female, ठीक है? So उनके demographics में आ गया. Are they using a mobile device or a desktop device, ठीक है? ये उनके environment में आ गया. वो किस environment में ज़्यादा comfortable है? अब मैं personally for most things I am comfortable. Even for Facebook, I am more comfortable using a laptop or a big screen rather than my phone, right? So हर एक बंदे की अपनी preference होती है. Which app do they spend most time using? ठीक है, वो Instagram use कर रहे हैं, वो Twitter use कर रहे हैं, वो Facebook use कर रहे हैं, ठीक है? So उससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं उनकी behavior के बारे में. When they close down an app, what's the next thing they open? ठीक है, अभी जब हम Instagram बंद करते हैं, mostly we switch to Facebook, Facebook बंद करते हैं, we switch to let's say some other app, ठीक है? या अगर कोई इस तरह के जो reading बहुत ज़्यादा करता है, right? तो maybe वो उस टाइप की कोई apps जो है उस पे जा रहे हैं, या वो जो है कोई चीजें सीख रहे हैं, या वो कोई learning के apps पे जाते हैं, right? So again, you have to observe that as well. अच्छा, what category of the apps are they using? ठीक है, which industry? Are they social media? Are they learning apps? Are they जो है कोई exercise वाली apps को use कर रहे हैं, right? So all of those things. So a study in the US showed that commuters are most likely to use Twitter in the morning. क्योंकि a lot of the people going to work, they need to catch up on the news, ठीक है? So the shortest way, मुझे भी जब कोई, so I'm a person who doesn't watch a lot of news. So in case अगर मुझे कोई कुछ कहता है कि let's say पिछले दिनों था कि there was a rumor, I think इमरान खान को कोरोना हो गया. So अभी जब actually when he met Edie's son, उससे पहले एक बार था कि वो British वो news agency reported falsely कि he had corona. So I think someone told me on WhatsApp, and the first thing I did, I opened Twitter. क्योंकि if it were true, it would be somewhere, किसी ने post किया होता, कहीं को trend हो रहा होता, कुछ ना कुछ होता, right? So personally, a lot of people use Twitter for quick access to news, ठीक है? तो सुबह जा रहे हैं, they need to know कि अच्छा भाई क्या हो रहा है, क्या market trends हैं, क्या सब कुछ चल रहा है, all of those things, right? अच्छा जी, फिर उसमें जो है दूसरी चीज जो है वापसी में जब वो आते थे, ठीक है? So they would use Instagram, ठीक है? So पूरा दिन गुजर चुका है, अब उन्हें काम की कोई टेंशन नहीं, वो घर जा रहे हैं, so they want to relax, ठीक है? So they just want to see कि what sort of a day did other people have, ठीक है? लोगों ने क्या तस्वीरें डाली हुई हैं? अच्छा, if he was going to work or she was going to work, or if they took an interesting picture at work, or if they took a picture while going to work or coming back, they probably post that on Instagram, right? So again, उस तरह से एक different behavior you can see कि भाई सुबह के टाइम इनका क्या mindset होता है, और शाम के वक्त जब छुट्टी के टाइम घर जा रहे थे क्या mindset होता है. अच्छा, फिर it was different for the older generation, right? For the older generation, travelers they mostly always preferred reading on Kindles, ठीक है, in the morning, and playing games on their phone in the afternoon, right? So they didn't want to do anything with social media, ठीक है? They're the generation के जो they would rather have a book. अगर book से वो लोग बहुत advance हो गए हैं, so वो Kindle पे ज़्यादा जो है e-book पढ़ लेंगे और वापसी पे they'd rather play a game to keep themselves entertained rather than go on social media, interact with people and all of those things, right? So again, it is very important. लोगों को देखने से आपको पता चल सकता है, उनके behavior study करने से आपको पता चल सकता है कि भाई ये क्या लोग हैं. You go to conferences, ठीक है? Again, इसमें जो है यही है कि who to watch, ठीक है? So who to watch, आपको जो पिछली हमने exercise sort of की कि जो प्रोफाइल बनाई है आपने लोगों को, you will find out कि भाई ये लोग आपको कहाँ पे मिलेंगे. Where do these people reside? Do they go to let's say अगर आपको कोई इस तरह का प्रोडक्ट है कि वो एक स्पेसिफिक एरिया में एक मस्जिद है, वहां पे आपका सारा कस्टमर बेस जा रहा है, राइट? सो यू गो टू द मॉस्क, यू ऑब्जर्व पीपल, ठीक है? कितने लोग जो है नमाज के बाद फोन निकाल के जो है उस पे वो मैसेज करना शुरू कर देते हैं. कितने लोग खुतबा सुनने के बजाय वो फोन पे जो है मैसेज करना शुरू कर देते हैं. कितने लोग आते हैं वो बिल्कुल रकात आखिरी सेकंड में पकड़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और वो नमाज पकड़ के निकल जाते हैं. कितने लोग अर्ली ऑन आते हैं, उनकी क्या एज ग्रुप है, कितने लोग
are last in first out, उनका क्या एज है. So just observing all of these things. ठीक है, तरावी के लिए आजकल अगर आप जा रहे हैं, you can just do this exercise. Observe people just for the sake of it कि आपकी वो exercise और एक practice उससे शुरू हो. अच्छा जी, नंबर 2 कीवर्ड सर्च. जिस तरह अर्लियर मैंने कहा कि आपकी आजकल सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन वो ऑनलाइन पड़ी हुई है. ठीक है, सो यू डोंट रियली नीड टू, सर्वे टूल्स ऑनलाइन हैं, आपके रिसर्च ऑनलाइन है, यू डोंट नीड टू गो आउट ऑफ योर होम. ठीक है, सो आजकल इज द बेस्ट टाइम टू डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स. I usually don't fill out survey forms, I get bored, right? लेकिन आजकल अगर मुझे कोई सर्वे फॉर्म दे मैं खुद नहीं भर लूंगा because there is not a lot to do. ठीक है, so आजकल तो इस टाइम का फायदा उठाएं. This is the perfect time that you guys can utilize to sort of conduct these surveys and do your market research. ठीक है, so keyword search, a lot of entrepreneurs just guess about what their customers find confusing or cool, right? You don't ask the customers. आपके ज़हन में आता है कि I think they will find this pretty cool. Turns out the customer does not. ठीक है, so there are two tools जो आप online use कर सकते हैं. One is Google Trends. ठीक है, so Google Trends is a website by Google that analyzes the popularity of top Google searches across various regions, languages. It's similar in concept to trending of hashtags on Twitter. ठीक है, so Instagram या उस पे होता है आपका Twitter पे hashtags trend करते हैं. ठीक है, so you can see what people are most interested in and try to use that information to form an opinion about what problems you should try solving. ठीक है, especially for those people who haven't figured out कि भाई वो क्या solve क्या करना चाहते हैं, या दो startups के जो अभी किसी चीज पे काम कर रहे हैं, they want to pivot their idea, right? So उस पे जो है ये लोग वो करना चाहते हैं. Excuse me just for a moment. जी, so उस पे जो है ये लोग they can go on Google Trends and they can see कि भाई what are things that people are talking about and what are the problems that people are talking about. दूसरा है Answer the Public, right? So Answer the Public is a website that lets you type in any keyword and get all of the questions that have ever been asked around. ठीक है, on Google में हम लिखते हैं कि भाई फलानी चीज. तो Answer the Public उसको अपने पास उसमें से सर्चेस को जो है ये वो करता है, रिट्रीव करता है और वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है. So if you put in stocks, let's say stock market का आप कुछ उसमें डालते हैं, right? As a keyword, you'll get a graph that lays out all the questions about a topic like how do I pick up low risk stocks. ठीक है, low risk stock के साथ में पिछले दिनों जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ यूएस में, ऐसा स्टॉक मार्केट तो क्रैश नहीं हुआ लेकिन बहुत बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स जो है गिर गए, and a lot of people were suddenly very interested in buying a lot of stocks at the stock market, but they didn't know how to, right? So उन दिनों में शायद ये क्यूरी बहुत ज़्यादा हुई कि अच्छा how to buy stocks, कौन सा स्टॉक खरीदूं, low risk stock क्या होता है. So एक word put in करने से this website gives you all the details that there is to know about that. I don't know if I to repeat it here. Anyhow, so I just want to talk about this study by Bill Gross जो कि has single biggest reason why startups succeed. ठीक है, so ये उसकी एक स्टडी में से बिल्कुल छोटा सा आप कह लेंगे समरी मैंने निकाली हुई है. There's also a 6-minute की TED talk that I'll be sharing with you guys as well, Bill Gross की. So again, it turns out that among many reasons that startups could fail, there are 5 that contribute most to the death of a new business, right? So the 5 Gross looked at in the study were the idea, the team, the business model, the amount of funding the startup has received, and the timing of the startup at its inception and launch, right? So ये 5 factors जब उसने apply किए कुछ companies पे, this is the result that he got, right? So timing was, he saw that 42% of the times startups either failed or succeeded because of their timing. उन्होंने business किस या तो बहुत जल्दी launch किया या बहुत late launch किया, ठीक है. टीम एंड एग्जीक्यूशन उसकी कैसी थी, ठीक है. एंड आइडिया जिस पे हम लोग इतना, आई ऑलवेज से दिस, हमारे इंक्यूबेटर्स की बहुत बड़ी गलती है कि हम लोग आइडिया करते हैं, एंड द ट्रूथ इज आइडिया इजंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्टार्टअप, ठीक है. सो आइडिया वाज 28%, देन द बिजनेस मॉडल एंड देन फंडिंग, ठीक है. सो आई विल शेयर हिज टॉक विद यू एज वेल. उसमें वो कहता है कि अ लॉट ऑफ गुड स्टार्टअप्स व्हेन दे स्टार्टेड उनके पास बिजनेस मॉडल था ही नहीं. But when they started making money, तो उन्होंने कहा okay now we need to make a business model, and they started making business models, ठीक है. And आखिर में फंडिंग, सो हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान में. फॉर एग्जांपल उनको Sakun.com आउट ऑफ कराची, उनको ठीक ठाक फंडिंग हुई, ठीक है. They couldn't last 2 years, ठीक है. और
बाकी काफी सारी पाकिस्तान में ग्लोबली आपके पास इतनी ऐसी कंपनीज हैं जिनको फंडिंग हो चुकी है, बट डिस्पाइट द फंडिंग उनकी एग्जीक्यूशन या बाकी सारी चीजें ठीक नहीं थी, सो दे डोंट लास्ट वेरी लॉन्ग। इसको अगर हम कंपेयर करें, सो आपके पास जो टॉप पे 5 कंपनीज हैं, these are the companies that succeeded, ठीक है। आपके पास जो बॉटम पे 5 कंपनीज हैं, these are 5 companies that failed, ठीक है। सो इसमें अगेन अगर आप देखें, नीचे की जो 3 कंपनीज हैं, वेबमैन हो गया, कॉस्मो हो गया, pets.com हो गया, इवन फ्लूज हो गया, these are कंपनीज जिनके पास they're highly funded, ठीक है। सो अगेन for those startups who think that funding will solve their problems are mistaken, ठीक है। So funding जरूरी नहीं है कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट मैटर, जो कि आपने अगेन आपको मार्केट रिसर्च से पता चलेगा। So again, it's all about timing. According to this study, timing accounts for 42% of the startup success. That means that if you launch at the wrong time, either too early, the world isn't ready for it yet, or too late, the world has evolved past needing it. You only have roughly a 50-50 chance of success, right? So you're basically leaving it to chance. It is very important कि आप timing तो देखें. So timing is something that I have not heard from any startup. पिछले for as long as I've been working in Peshawar in the startup ecosystem, I have not heard it from any startup कि वो timing की बात करें कि मैं ये इसलिए launch करना चाहता हूँ कि this is the perfect timing to do so, या मैं I want to wait it out because this is not the perfect time to launch it, right? So again, it is very important कि आप अपनी market research में timing भी तो देखें, right? कि is the market ready for it? Are the people ready for it, right? So all of those things are very important. So again, looking at timing जो है is a very essential part of जो है market research, which should happen almost immediately after the founder comes up with the idea. ठीक है? So some mistakes that the startups make, it is, so the founders have this notion that if they make something, people will use it. ठीक है? So आपको लगता है कि just because you make it, people will use it, ठीक है? So it's actually the other way around. If people need it, you need to make it so that they use it, ठीक है? So आपने ये तो कभी उसको नहीं लेके चलना कि just because you're making it. अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा जो मसला होता है, a lot of times startup sort of know, they get the feeler कि यार ये चीज नहीं चल सकती, but they still somehow keep on putting in more money, they keep on putting in more effort, और वो sunk cost बढ़ती जाती है. And just because they're in love with that idea, they just can't let it go, और वो और नुकसान करते जाते हैं. And the most important thing that robs them of is their time, ठीक है? So they could have spent that time in pivoting their idea or starting something else altogether, rather than wasting more time and effort in that particular idea, right? So many founders avoid conducting market research because they do not want to hear bad news about their idea or see someone else is doing it already, ठीक है? So जिस तरह अभी मैंने बात की, you know the reality, but if you close your eyes to it, that's not going to change the market dynamics, ठीक है? If you don't want to hear bad news, ठीक है? So a lot of the times people get very disappointed when you tell them that this is not going to work out. So हमारा एक startup था, they were very wise इस लिहाज से. So Tariq Khattak is probably going to be involved with the 5th cohort in some one way or another. Initial इरादा तो ये था कोरोना से पहले. So उनका और मुर्तजा हसन हमारे एक दूसरे जो है co-founder थे. They started this idea ads के नाम से कि वो लोग वो करेंगे different transportation vehicles में, आपकी taxis हो गई, Ubers हो गई, Careems हो गई, उसमें वो tablets लगाएंगे या different किस्म के advertising material लगाएंगे, गाड़ी के ऊपर board लगाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे. And this was the basic idea. So when they did their research, they talked to really, we helped them talk to PTCL, वो उनके साथ गए, market research की, PTCL ने उनको even pilot करने की भी offer दी कि उनके vehicles में pilot करें. They talked to some other people. At the end of the day, the market indicators were that it is something that is not going to work, right? And they said, okay, they were very mature about it, and they left mid-cohort. They were like, okay, we don't want to do this. If something that is going to cost us so much money and so much effort and it's not going to work, why should we do it, right? So that is something that all founders need to have, right? The sort of the courage to quit and start something else, right? So वो एक बहुत जरूरी चीज है कि जो आप लोगों ने करनी. अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है आपका आता है कि founders forget that in due time they have to look for investors. Investors are only impressed by understanding of the industry environment that you're earning, right? So अगर आपका enough market research नहीं होगी, right? So why does the investor want to invest in a startup, right?
Why? उसने कोई खैरात करनी है, उसने कोई बहुत कोई अच्छा बंदा है, right? They want to invest because they want to make money, ठीक है? So if they want to make money, what do? They do market research, just as you do. So अगर आप उनकी जो वो effort है उसको cut down कर सकते हैं and you do market research instead of them and you can convince them कि यार ये देखो ये numbers हैं, numbers don't lie, ये मैंने market research की है, this thing is going to work. So becomes very easier for the investors to become convinced and invest in a startup who has done their market research. ठीक है, उस दिन भी कल हम जो है परसों जो हमारा सेशन था, मीना और उमर वो ये कह रहे थे कि people who say that they don't have competitors, ठीक है, so वो for an investor that's like मतलब आपने इतनी मार्केट रिसर्च भी नहीं की कि आपको ये भी नहीं पता. तो यूजुअली जब हमने 3-4 कंपटीटर के टाइप्स की बात की कि अगर वो डायरेक्ट कंपटीटर आपका नहीं है, इज देयर समवन catering to the same customers as you, ठीक है, या फिर ऑनलाइन स्पेस पे एटलीस्ट कोई इस तरह तो होगा जो आपके साथ compete कर रहा है. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स यू नीड टू नेल देम डाउन. आपको ये सारी चीजें A to Z पता होनी चाहिए. अच्छा जी, अच्छा, so I will be linking this to what we earlier did, the exercise जो हमने की थी उसकी branding वाली, जिसमें brand personality और उसकी हमने बात की थी, because now we've done the research on customer personality, ठीक है, and brand personality. So now more or less we need to link them together. But before we do that, I'd just like to share that video with you. Let me know if you guys can see the screen. Farhad? Bilal, we can see your slides for your screen. Oh, okay. Let me share the screen. Yeah. Okay. Now can you see it? Nope. Yes, No? now we can see it. अब देख सकते हैं. ठीक है. अब आ गया. So let me play this video जो मैंने earlier Bill Gross की बात की. This is 6 minute 6-6.5 minute TED talk है. So उसमें जो है देखते हैं कि what does he have to say. And also let me know if sound आ रहा है कि नहीं. I don't know how this works. I'm really excited to share with you some findings that really surprised me about what makes companies succeed the most. What factors actually matter the most for startup success? I believe that the startup organization is one of the greatest forms to make the world a better place. If you take a group of people with the right equity incentives and organize them in a startup, you can unlock human potential in a way never before possible. You get them to achieve unbelievable things. But if the startup organization is so great, why do so many fail? That's what I wanted to find out. I wanted to find out what actually matters most for startup success. And I wanted to try to be systematic about it, avoid some of my instincts and maybe misperceptions I have from so many companies I've seen over the years. I wanted to know this because I've been starting businesses since I was 12 years old, when I sold candy at the bus stop in junior high school, to high school when I made solar energy devices, to college when I made loudspeakers. When I graduated from college, started software companies. And 20 years ago, I started Idea Lab. And in the last 20 years, we started more than 100 companies, many successes and many big failures. We learned a lot from those failures. So I tried to look across what factors accounted the most for company success and failure. So I looked at these 5. First, the idea. I used to think that the idea was everything. I named my company Idea Lab and how much I worship the aha moment when you first come up with the idea. But then over time, I came to think that maybe the team, the execution, adaptability, that mattered even more than the idea. I never thought I'd be quoting boxer Mike Tyson on the TED stage, but he once said, everybody has a plan until they get punched in the face. And I think that's so true about business as well. So much about a team's execution is its ability to adapt to getting punched in the face by the customer. The customer is the true reality. And that's why I came to think that the team maybe was the most important thing. Then I started looking at the business model. Does the company have a very clear path generating customer revenues? That started rising to the top in my thinking about maybe what mattered most for success. Then I looked at the funding. Sometimes companies received intense amount of funding. Maybe that's the most important thing. And then of course the timing. Is the idea way too early and the world's not ready for it? Is it early, meaning you're in advance and you have to educate the world? Is it just right, or is it too late and there's already too many competitors? So I tried to look very carefully at these 5 factors across many companies. And I looked across all 100 Idea Lab companies and 100 non-Idea Lab companies to try and come up with something scientific about it. So first, on these Idea Lab companies, the top 5 companies
City Search, Cars Direct, GoTo, Net Zero, Tickets.com, those all became billion-dollar successes. The 5 companies on the bottom, Z.com, Insider Pages, My Life, Desktop Factory, PeopleLink, we all had high hopes for, but didn't succeed. So I tried to rank across all of those attributes how I felt those companies scored on each of those dimensions. And then for non-ideal companies, I looked at wild successes like Airbnb and Instagram and Uber and YouTube and LinkedIn, and some failures, Webvan, Cosmo, Pets.com, Flues, and Friendster. The bottom companies had intense funding. They even had business models in some cases, but they didn't succeed. I tried to look at what factors actually counted the most for success and failure across all of these companies, and the results really surprised me. The number one thing was timing. Timing accounted for 42% of the difference between success and failure. Team and execution came in second, and the idea, the differentiability of the idea, the unique idea, that actually came in third. Now, this isn't absolute definitive. It's not to say that the idea isn't important, but it very much surprised me that the idea wasn't the most important thing. Sometimes it mattered more when it was actually timed. The last two, business model and funding, made sense to me, actually. I think business model makes sense to be that low because you can start out without a business model and then add one later if your customers are demanding what you're creating. And funding, I think as well. If you're underfunded at first, but you're gaining traction, especially in today's age, it's very, very easy to get intense funding. So now let me give you some specific examples about each of these. So take a wild success like Airbnb, everybody knows about. Well, that company was famously passed on by many smart investors because people thought, no one's going to rent out a space in their home to a stranger. Of course, people proved that wrong. But one of the reasons it succeeded, aside from a good business model, a good idea, great execution, is the timing. That company came out right during the height of the recession when people really needed extra money. And that maybe helped people overcome their objection to renting out their own home to a stranger. Same thing with Uber. Uber came out, incredible company, incredible business model, great execution too, but the timing was so perfect for their need to get drivers into the system. Drivers were looking for extra money. It was very, very important. Some of our early successes, City Search came out when people needed web pages. GoTo.com, which we announced actually at TED in 1998, was when companies were looking for cost-effective ways to get traffic. We thought the idea was so great, but actually the timing was probably maybe more important. And then some of our failures. We started a company called Z.com. It was an online entertainment company. We were so excited about it. We raised enough money. We had a great business model. We even signed incredibly great Hollywood talent to join the company. But broadband penetration was too low in 1999, 2000. It was too hard to watch video content online. You had to put codecs in your browser and do all this stuff. And the company eventually went out of business in 2003. Just 2 years later, when the codec problem was solved by Adobe Flash, and when broadband penetration crossed 50% in America, YouTube was perfectly timed. Great idea, but unbelievable timing. In fact, YouTube didn't even have a business model when it first started. It wasn't even certain that that would work out, but that was beautifully, beautifully timed. So what I would say in summary is execution definitely matters a lot. The idea matters a lot, but timing might matter even more. And the best way to really assess timing is to really look whether consumers are really ready for what you have to offer them. And to be really, really honest about it, not being in denial about any results that you see. Because if you have something you love, you want to push it forward. But you have to be very, very honest about that factor on timing. As I said earlier, I think startups can change the world to make the world a better place. I hope some of these insights can maybe help you have a slightly higher success ratio and thus make something great come to the world that wouldn't have happened otherwise. Thank you very much, my great audience. So again, the earlier things I discussed out of his study is probably one of the most important things जो कि आज तक मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे local किसी startup ने इस पे concentrate किया कि what is the timing of the launch of the product. We've seen it globally कि काफी सारे बड़े-बड़े so timing के हवाले से there are tons and tons of examples, right? For example, सबसे बड़ी example हमारे सामने जो है वो Kodak की है. So Kodak cameras were the market leader. Films भी बनाते थे, cameras भी बनाते थे, and all the R&D, research and development was conducted at Kodak Labs by the engineer जिसने digital camera बनाया था. So when he made it and when he took it to the people, the higher ups, and they were like, because they were looking at it from this point कि अगर हम digital cameras बनाएंगे तो हमारी relay कौन खरीदेगा, right? And they did not look at the bigger picture. So उसमें उनको क्या मसला हुआ कि again Kodak went out of business. That particular engineer joined, I think, Olympus or some other company जिन्होंने पहला digital camera launch किया, and now we know कि the rest is history.
And then Kodak did launch a digital camera very later in the game, but उसको काफी देर हो चुकी थी और वो फिर they were out of business. Similarly, Nokia को हम सबके सामने when the Android and iOS sort of battle began, तो उसमें Symbian OS का क्या रोल था? Why did they not upgrade on time, right? So उनकी timing ठीक नहीं थी, and now they've re-entered the market with Android. So again हमने टाइमिंग के लिहाज से बहुत बड़ी कंपनियां जो है फेल होती देखी, और as जो है Rose said, there are a couple of really good successful examples as well, right? So coming back to the brand personality part, so again it's more or less the same thing that we discussed last time. हमारे पास क्योंकि कुछ वो भी हैं BIC के और दूसरे स्टार्टअप्स भी हैं, तो उनके लिए I'll just do a quick overview के I think आपका mic there you go. अच्छा, so again ये कि 12 universal characteristics हैं जो कि हम associate करते हैं चीज़ों के साथ, उनके को एक human वो देते हुए एक perspective देते हुए, right? So ये exercise हमने last time की थी. So now I think you guys would be able to connect this better, because now you know who your customer is. So यही सारी चीजें आप अभी अपने customer पे भी fit करके देखें, और फिर यही सारी चीजें आप जो है अपने startup या अपने brand या अपने product पे भी fit करके देखें. So this time this is going to be a better fit. You will know exactly. So last time जो हम गलतियां कर रहे थे कि हमारा startup जो है वो आता था let's say caregiver की category में, but we wanted to put it in as ruler. So आपको अपने customers कि अभी प्रोफाइल और डायनामिक्स और वो सारी चीजें समझते हुए ये बेहतर पता चलेगा कि नो आई शुड पुट इट इन caregiver rather than something else. So this is an exercise. उस जब हमने initially आपका माइक अनम्यूट हो गया. there we go. तो अगेन अब इस वक्त आपकी जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी रिगार्डिंग जो है प्रोडक्ट पर्सनालिटी, ब्रांड पर्सनालिटी in accordance with customer personality, right? So due to lack of communication with their customers, 70% of startups fail. Okay, so how do we overcome that? And that is customer feedback. One of the most important things that startups do not do, हम customer को चीज बेचने से पहले तो पूछते हैं, हम उस चीज बेचने के बाद उसको बिल्कुल नहीं पूछते, right? So customer feedback is one of the most important factors of market research. ठीक है, स्पेशली इफ वी आर बिल्डिंग एन MVP, तो MVP को आप तभी इनहेंस कर सकेंगे कि एक कांस्टेंट एक लूप चलता रहेगा, फीडबैक लूप अगर चलता रहेगा, वो चीज आप बताते रहेंगे, वो कस्टमर्स आपको आप उसमें इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, एंड इट्स अ कांस्टेंट फीडबैक लूप जो कि चलता रहेगा ना, आप उनको चीजों को इंप्रूव करते रहेंगे, राइट? सो कस्टमर्स एक्सपेक्ट एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस विद योर कंपनी, एंड अनफॉर्चुनेटली पीपल टॉक अबाउट बैड कस्टमर एक्सपीरियंसेस मोर देन दे विल brag about good customer experiences, right? Researchers found that 86% of buyers will pay more for a better brand experience. ठीक है, अभी हम में से देख लें, जहां तक बात आती है कि गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस की, हम में से कितने लोग, if we go to a restaurant and we have a bad experience, ठीक है, we're prone to come home and write a bad review on their Facebook page. कितनी बार होता है कि, और 10 बार हमारा जब अच्छा एक्सपीरियंस होता है, we don't, जब तक ये बिल्कुल दिल को नहीं लगती एक आध बार, we do not come back and write a good review. ठीक है, बहुत rarely इस तरह होता है कि हम एक अच्छा रिव्यू लिखेंगे, लेकिन बुरा रिव्यू लिखने के लिए we're absolutely ready, right? So इसलिए it is very important कि आप उनसे feedback लें. Personally, one of the best examples of this that I've seen is in Karachi. I'm sure आप लोगों में से काफी लोग गए होंगे. So there's a restaurant called Kolachi. I'm not sure if any of you have been there. I'm sure काफी सारे गए होंगे. So उनका जो feedback mechanism है, it is to that extent के बंदा हैरान रह जाता है बिल्कुल कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं. So Khabar has been there. So when the food is served, ठीक है, वो आपसे थोड़ी देर बाद, so probably they've timed it, उन्होंने किया हुआ है कि भाई इतने टाइम बाद हमने पूछना है, so waiter will come and he'll ask you कि ये कोई चीज में मसला तो नहीं है. अगर आप उनको छोटा सा भी एक कह दें फीडबैक, ठीक है, so let's say we went there and we ordered mutton kadai. So when you go from Peshawar to Karachi and you order mutton kadai, so you expect mutton kadai, right? So what they brought was more or less like a salan of sorts, and we told them that this is not bad, but this is not mutton kadai. It was just a feedback. We told them this is really good, but this is not the mutton kadai we were expecting.
थोड़ी देर बाद another मटन कढ़ाई came with more tomatoes and everything, and I'm sorry अगर आप सबको भूख भी लग रही है इस वक्त लेकिन it's just an example. तो वो आया. So then when I found out from other people कि they will keep on refreshing your order जब तक कि आप कहते नहीं हैं कि this is perfect, ठीक है. So अच्छा, when you get off from the table, जब all आपने वेटर को बता दिया everything was good, everything is okay. So when you're exiting the building, वहाँ पे उनका एक और representative खड़ा होता है, and just to make sure कि आपने जो है कोई वेटर ने आपको गोली शोली नहीं ना कराई हो, ठीक है, और उसने फीडबैक ये नहीं है कि किचन को ना, so he asks you again कि जी आपको कोई मसला तो नहीं आया, वेटर के साथ कोई मसला नहीं आया, कोई बात हो तो मुझे बता दें, राइट. सो अगेन वो दोबारा अपने फीडबैक मैकेनिज्म पे उन लोगों ने एक और चेक लगाया हुआ है, एक और फीडबैक मैकेनिज्म के साथ. I was really surprised this one time that instead of going to the restaurant, we ordered food through their delivery services. And you would not believe that when the food arrived, we unpacked it, we ate a little, ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा खाया, फोन बजा, and they said, "Is the food okay?" ठीक है. So again, they probably timed it. उन्हें पता था कि भाई लोग कितना टाइम लगाते हैं उसको बर्तन में डालने में, फिर सर्व करने में, फिर खाने में. And if we had told them कि यार इसमें कोई मसला है, and they were like कि हम और भिजवाते हैं, आप इस ऑर्डर को इसी तरह छोड़ दें, right? So again, इस तरह का, इस लेवल का फीडबैक मैकेनिज्म जो है is extremely important, ठीक है, कि आप कस्टमर से कॉन्स्टेंटली पूछेंगे भाई क्या चीजें हैं जो आप जो है करना, you want the customer to see in your product, right? अच्छा जी. So I think this is the last slide. Or if you guys have any questions, I'll just exit this screen, and जो भी अगर कोई questions हैं तो I'll take them now. जी खावर, the floor is yours. जी बिलाल, मैंने जो है वो अनम्यूट वाला ऑप्शन ऑन कर दिया, तो whoever has the question they can unmute themselves to ask the question. सही है? Sure. हेलो जी आफ्ताब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम आफ्ताब, कैसे? ठीक ठाक. अल्हम्दुलिल्लाह सर. सर मेरा फीडबैक पे एक क्वेश्चन था सर के बहुत टाइम हम लोग मतलब कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं होता, मतलब एक्चुअल में वो चाहता क्या चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल मैं उससे फीडबैक भी ले लूँ, MEP मतलब कोई भी फीचर उसको प्रोवाइड कर दूँ, वो उसको देख के मतलब अंदाजा लगाता है. एग्जैक्टली उसको वो आइडिया नहीं होता कि मतलब उसको क्या चीज़ चाहिए होती है. तो टाइम टू टाइम अगर मैं मतलब उनसे फीडबैक लेता रहूँ तो उसमें महीना 2 महीने लगते हैं. अगर मैं खुद से उसको एक चीज़ मतलब प्रोवाइड कर दूँ तो शायद मुझे लगता है कि मतलब वो फिर आसानी से समझ सकता है. बहुत सारे टाइम ये होता है कि कस्टमर को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो असल में चाहता क्या है. So देखें, being the founder, you know what's the best fit for your startup, right? So हमने feedback फर्ज नहीं कर दिया, ठीक है. So again, if you think कि customer को आपने educate करना है, ठीक है. So a lot of the times there are certain products, there are certain services के जिसमें आपने उनको educate करना होता है, ठीक है. You know better than those customers, right? So उस scenario में if you feel like कि आपने उसको educate करना है, तो फिर उसको अगर understanding ही नहीं है तो आपको क्या feedback देगा, right? So again, this applies most of the times, not all of the times, ठीक है. अगर आपको लगता है कि अच्छा, दूसरी बात ये कि फीडबैक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको फीडबैक पहले लें उससे, ठीक है. So that would be suggestion, ठीक है, कि आप उससे कह रहे हैं कि मैं क्या चीज इनकॉर्पोरेट करूं. जब आपका वो प्रोडक्ट यूज कर लेता है, ठीक है, सो मैं उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ कि भाई वो क्या फीडबैक आप उससे लेंगे कि भाई लेट्स से आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, लेकिन लेट्स से आपका कोई लोड टाइम ज्यादा था, उसको कोई फीचर्स जो है वो पसंद नहीं आ रहे, is it very complicated, ठीक है. For example, because I've used all three, जो earlier मैंने बात की, Microsoft Teams भी यूज किया, Google Hangouts भी यूज किया, Zoom भी यूज किया. अब अगर कोई मुझे तीनों का फीडबैक ले मुझसे, तो क्योंकि मैंने तीनों यूज कर लिए हैं, ठीक है, so I'm in a very good position कि मैं तीनों का फीडबैक अच्छे तरीके से दे सकूं. So this feedback is for those people, जो मैं वो बात कर रहा हूँ कि after using your service, जब आप उनसे फीडबैक लेंगे कि भाई इसमें आप क्या चीज चेंज करना चाहते हैं, ठीक है. So during build process वाला फीडबैक मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है. सो जब MVP में ये किस तरह इनकॉर्पोरेट होगा कि आपने जब उनको एक चीज दी, फॉर एग्जांपल आपकी ऐप है उसमें 10 फीचर हैं, ठीक है. आपने उसमें से अंदाजा लगाया कि भाई इसमें क्या 3 फीचर्स हैं,
ठीक है. सो इसकी एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज मैं कराता हूँ कि आप एक फॉर एग्जांपल वो कर रहे हैं, आप एक ऐसी ऐप या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, कि जिसमें यू आर डूइंग लेट्स से हॉस्पिटल्स को आप ऑन बोर्ड एक ऐप पे ला रहे हैं, ठीक है, पेशेंट्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए आपने एक टूल बनाया, ठीक है, उसके आप 10 फीचर स्टेट करें, ठीक है. सो दिस इज एन एक्सरसाइज दैट प्रीवियसली आई डिड बीआईसी के स्टार्टअप्स के साथ. उसमें से देन आई आस्क्ड देम कि अच्छा इसमें से अब आप ने बिजनेस चलाना है लेकिन आपने 3 फीचर्स छोड़ दे रहे हैं, बाकी 7 आप हटा दें, ठीक है. सो देन दैट फोर्सेस यू टू कम डाउन टू द बेयर एसेंशियल्स के आपका जो कोर है बिजनेस का, आप उस पे आ जाते हैं कि भाई ये 3 चीजें, इनके बगैर तो कारोबार चल ही नहीं सकता, ये 7 चीजें हैं जिन पर मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, राइट. सो देन यू स्टार्ट विद दोस बेसिक मिनिमम थिंग्स, आप उस पे एक मिनिमम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और उसमें फिर अगर आप कस्टमर फीडबैक देता है कि भाई इसमें तो मेरे ख्याल से ये चीज भी होनी चाहिए, ठीक है, एंड यू हैव दैट फीचर रेडी टू प्लग इन, और आप उसको प्लग इन करके आप कस्टमर को उसको प्रोवाइड कर देते हैं. अगर रेडी प्लग इन नहीं है तो आप देन आफ्टर दैट यू क्रिएट दैट वर्जन और उस पे आप जो है फर्दर डेवलपमेंट वगैरह करके और वो चीज आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं. थैंक यू. ठीक है जी. एनीवन एल्स? जी उज़ैर, मैं स्लाइड्स व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा. जी किसी और का क्वेश्चन है कोई? So Bilal, I guess we are done with the questions. We don't have any other. या तो आई डिड अ रियली गुड जॉब, और या जो है सबको रोजा लगा हुआ है. So actually रोजा भी है ना, लोग अफ्तारी की तैयारी वगैरह के अंदर इस वक्त ज्यादा उनका माइंड इस वक्त अफ्तारी के में रोजा आज से मैंने स्टार्ट किया. They're not into this session. Okay guys, thank you very much for joining us. Thank you very much Bilal for this very amazing session. और feedback forms आप लोगों को group पे आ जाएंगे, so fill them up and thank you जी. Allah Hafiz, bye bye. Thank you. Take care जी. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.